gift item worth rupees 375 is sold by a shopkeeper with a profit of rupees 36. Find the selling price of the gift item. So what is given to you is selling price is going to be cost price plus profit. So each and everything is given to you. As 375 is the cost price, profit is 336, so your selling price is going to be what? 411 rupees. Okay, next come to the next problem. Gajinder bought a fan of rupees 1350. Okay, he found that the fan was defective, so sold it at a loss of rupees 160. So find out the selling price of the fan. Again the same thing is there. Selling price is going to be cost price minus loss. Cost price is going to be 1350, loss is going to be 160. So let's subtract it. So 1350 minus 160 is going to be what? 1190 rupees. So that is going to be your selling price after getting a loss of 130 rupees. 160 rupees, sorry. If the selling price of the 10 articles is the same as the cost price of 11 articles, find the gain percent. So let's assume that cost price of 11 articles, okay, and let's say that cost price of one article is 1 rupees, so 11 articles is about 11 rupees. Now find the gain percent for what? If you sell this particular 10 articles in the same amount in 11 rupees, so what should be the selling price of one article? So it is 11 divided by 10, so it is 1 rupees 10 paisa is going to be your selling price of one article. Now we need to find out profit percent. So profit percent is going to be selling price minus cost price divided by cost price into 100. Selling price is 1 rupees 10 paisa, cost price is 1 rupees divided by 1 rupees into 100. 1 rupees 10 paisa minus 1 is what? 10 paisa only. 10 paisa you can say 10 paisa. 1 rupees you can say 100 rupees, 100 paisa. So this is what? 10%. So what the amount of percent you got? 10% profit is going to be there. Okay, so that is the quite you can say not tricky actually, but the calculation part is bit on easier part. Find the gross price of an article by selling the same for rupees 450. You incur a loss of 10%. If you incur a loss of 10%, so directly we can say that 90% of cost price was what? It was 450 rupees. So 90% of a cost price is 450 rupees. So what is the value of cost price? It is going to be 500 rupees. Now with the same 500 rupees, that was a cost price, and what they want a gain of 10%. So right now or this time the selling price should be 110% of cost price. And what is cost price? 500 rupees. So selling price is going to be what? 550 rupees. Okay, but whenever these type of problems are there, you can use a direct trick. What that should be that trick? That 90% of something is what? You can say 450 rupees, and you got a 10% loss. So obviously it was 90%, and that is equals to 450 rupees. So 90% of something, and what is that something we are counting? That is always going to be cost price. Okay, so 90% of something is 450. So 1% of the same something is going to be what? 5 rupees. Now 1% is there, but now you got a profit of 10% or a gain of 10%. So it should be 110%. So what is the amount of 110? So 110 into 5 is what? 550 rupees. So the same answer is there, but you can do it directly that by comparing the percentages. Okay, these are the question you will get a lot in the particular textbooks. Next, come to the next question. A man bought oranges at the rate of 4 rupees, okay, and sold them at a profit of 40%. Okay, let's say oranges, amount of oranges, you can take mangoes, because oranges, you know, it looks like that they are 0 actually. So let's say 4 mangoes are costing 1 rupees.
So that is a cost price. So cost price of one mango is going to be what? 1/4 rupees. Now on this cost price, you get a profit of 40%. So what should be the selling price and at what selling price you want to sell? So 1/4 into 40%, 140%. So that is 1/4 into 140% is going to be what? 0 से 0 काट सकते हैं हम लोग. So 2 2s are 4. So that is what? 7/20 rupees. So that is your selling price. Okay. Now 1/4 rupees का मतलब क्या था? 1/4 का मतलब था 4 mangoes of 1 rupees. तो 7/20 का मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं? 7/20 का मतलब मैं लिख सकता हूँ कि 20 mangoes of 7 rupees. ओके. तो आप याद रखना, इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं फिक्स होके आता है कि यहाँ पे जो 7 रुपीज होंगे उसमें नंबर ऑफ मैंगोज या ऑरेंजेस जो होंगे दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इंटीजर पार्ट. व्हाई? आप ये तो नहीं ले सकते हो कि 5.5 मैंगोज आ जाएंगे आंसर में या 6.25 मैंगोज आएंगे. तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो ये सब सेट होके आता है कि आपके जो नंबर्स होने चाहिए दे शुड बी इंटीजर्स. तो ये जो रुपीज लिखे जाते हैं उसमें फिक्स है कि जो नंबर आएगा वो हमेशा इंटीजर नंबर ही आएगा. फाइन. तो आप ऐसे फ्रैक्शंस को डायरेक्ट यूज करा सकते हो उससे. क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Two articles are sold at 198 rupees each, such that a profit of 10% is made on the first, while a loss of 10% is made on the other. What would be the net profit or loss on the two transactions combined? Okay, so let's write down a frame actually, because that is another easy question और थोड़ा सा टफ भी है. सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है दोनों का 198. ये सेलिंग प्राइस कब मिला है? जब आपने एक पे 10% का प्रॉफिट लिया है और दूसरे पे 10% का लॉस लिया है. लेट्स से पहले वाले का कॉस्ट प्राइस x है, दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस y है. तो ये आपको अमाउंट कैसे मिला है? फर्स्ट अमाउंट मिला है आपको कि किसी नंबर का जब आपने 110% किया था x का तो आपको 198 रुपीज़ मिले. तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं. 11 1 जा 11 करेंगे आप तो 8 बचेगा. 11 8 जा 88. तो आपका x है उसका वैल्यू आ जाएगा 180 रुपीज़. सेम आप इस वाले के साथ अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको इस बार 10% का प्रॉफिट मिला है तो आप क्या लिखेंगे? सॉरी 10% का लॉस हुआ है. सो 10% का लॉस हुआ है तो आप लिखोगे 90% ऑफ y इज इक्वल्स टू 198 रुपीज़. तो यहाँ से काट दीजिए. 9 2 जा 18, 9 2 जा 18. सो वैल्यू ऑफ y इज व्हाट? 220 रुपीज़. तो यहाँ से आपके दोनों कॉस्ट प्राइजेस निकल चुके हैं. आपके पास दोनों सेलिंग प्राइजेस हैं और सेलिंग प्राइजेस कितना है? 198 ईच. तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा? 396. और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 220 प्लस 180 इज व्हाट? 400 रुपीज़. नाउ आपको क्या निकालना है? आपको ऑल ओवर प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है. साफ दिख रहा है कि आपका सेलिंग प्राइस कम है, आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है. सो यू गेट अ लॉस एंड दिस लॉस परसेंट इज व्हाट? ऑफ 4 रुपीज़. एंड व्हाट कॉस्ट प्राइस? इट इज कॉस्ट प्राइस इज 400 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो आपको कितने रुपीज़ का लॉस हुआ है? आपको 1% का लॉस हुआ है टोटल ट्रांजेक्शन के अंदर. ये वाले क्वेश्चंस जब होते हैं, जब कॉमन गेन और कॉमन लॉस इस पे दोनों पे इक्वल होता है, तो आप इसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो. तो इसका फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो. दैट इज गिवन बाय देयर इज ऑलवेज अ लॉस परसेंट. ओके, सो मेक श्योर कि यहाँ हमेशा लॉस होगा. दैट इज गिवन बाय कॉमन गेन और लॉस व्हाट इज गिवन टू यू डिवाइड बाय 10 और उसका होल स्क्वायर. ओके, सो जो भी कॉमन गेन कॉमन लॉस होता है डिवाइड बाय 10 करोगे और उसका होल स्क्वायर कर दोगे. लेकिन दिस क्वेश्चन कॉमन गेन कितना था? 10 डिवाइडेड बाय 10 और उसका होल स्क्वायर करोगे. सो 1 का स्क्वायर इज व्हाट? 1. तो आपको 1% का लॉस हुआ था. ठीक है यहाँ तक? अगर यहाँ पे मैं बोलता कि 20% का प्रॉफिट 20% का लॉस हुआ था तो क्या होगा? सो इट इज 20/10 और फिर उसका होल स्क्वायर. सो 20/10 इज 2, 2 का होल स्क्वायर इज 4. सो 4% का लॉस इसके अंदर हो जाएगा. ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये डायरेक्ट ये वाला ट्रिक भी इसमें अप्लाई करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
A person purchases 50 dozen eggs at rupees 4 per dozen. Of this, 40 eggs were found broken. At what price should he sell the remaining eggs in order to make a profit of 5%? Okay, तो सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालते हैं. कॉस्ट प्राइस कहूँ 50 डजन 4 रुपीज़ पर डजन पे सेल किया है, तो कितने रुपीज़ में सेल किया है उसने? 200 रुपीज़ के अंदर. और टोटल एग्स कितना है एक्चुअली? तो 50 डजन एग्स है. 12 इंटू 50 इज व्हाट? 600 आपके पास एग्स है. बाद में उसने कहा है कि कुछ भी हो जाए उसको तो 5% का प्रॉफिट चाहिए. तो 20 का 10% कितना होता है? 200 का 10% 20, तो 5% कितना हो जाएगा? 10. तो उसने कहा कुछ भी हो जाए उसको इस पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर 210 रुपीज़ चाहिए. ओके, बट प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे दैट 60 आउट ऑफ 60 eggs 40 eggs वर ब्रोकन डाउन. सो हाउ मेनी eggs आर लेफ्ट? 560 eggs आर लेफ्ट. उसने कहा था कि रुपीज़ जो है वो आपको डजन में चाहिए, कि डजन के अंदर कितना होगा. तो आपने 12 का डिवाइड लगा दिया यहाँ से, तो आपको पता चल गया है कि 140 डिवाइड बाय 3 डजन एग्स जो है वो आपको कितने रुपीज़ में सेल करने हैं? 210 रुपीज़ के अंदर आपको सेल करने हैं. 7 2 14, 7 3 21. तो 1 डजन एग कितना होगा? 9/2, एंड दिस इज गोइंग टू बी 4.5 रुपीज़ पर डजन. तो 1 डजन एग कितने का हो जाएगा? 4 रुपीज़ 50 पैसा पर डजन. ओके ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. An article costing rupees 200 is marked 25% higher than its cost price, and it is sold at discount of 10% for cash payment. A customer is ready to pay the full amount on the spot. What is the shopkeeper's percentage profit? So an article costing rupees 200 is marked 25% higher than cost price. So what should be the mark price now? It is 125% of 200. So obviously it is going to be 250 rupees is your mark price. Out of that he started to give a discount of 10%. So we can directly say that 250 is 10% is going to be what? 25 rupees is off. So now at what amount he started to sell actually? That is of 225 rupees. But still, what was the cost price? So cost price was 200 rupees, and now he is selling at it 225 rupees. So we can say that he is gaining 25 rupees profit. Okay, so percentage profit we can calculate by profit divided by cost price into 100. So 12.5% going to be your profit percent. So what should be the profit percent? Actually what they asked you is a percentage profit. So now still he is gaining 12.5% of profit. Okay, if a commission of 10% is given on the mark price of a book, then the publisher gains 20%. If the commission is increased to 15%, then what is the gain percent? Okay, that is really good question actually. Now see, the thing is that percentage is all over the question is given to you, and they asked you about percentage. So in these type of questions you can assume a quantity or anything that is going to be there. A commission of 10% is given on the mark price. So let us assume that mark price is going to be what? It is going to be 100 rupees. Now 10% is commission is given to you, so minus 10 rupees is there. So they are agreed to sell it at what? 90 rupees. Then the publisher gains 20 rupees, but still he is gaining 20 rupees, or sorry, 20% on that. So I think the most important thing, as I already told you in the theory part, then whenever you are solving question of profit and loss, make sure that you are calculating the value of cost price. So cost price can be written by gaining 20% on this. So we can say this 120% of cost price, and that is equals to what? 90 rupees. So what should be the value of cost price? It is 90 into 100 divided by 120. 33s are 34s are, this is 25. So cost price is what? 75 rupees. So 75 rupees is the cost price of this particular book.
Now but the question is changed actually. Now what they are demanding, if you started to give 15% discount, so that is minus 15 rupees. So now your selling price is going to be what? It is 85 rupees. And what is your cost price? Your cost price is fixed, that is what? 75 rupees. So now what is the percentage profit you want to gain? So profit is changed actually. Now the profit is what? Is only of 10 rupees. Cost price is what? 75. So that is 75 into 100. 5 2s are 10, or nothing to do with 10 actually. 25 3s are 25 4s are. So this is what? 40 divided by 3%. So 40 divided by 3%, or you can say 13.33% is also there. Okay, so that is going to be your profit percent. Okay,